Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the structure of bacteriophages as well as replication in bacteriophages. So let's move to the classboard. So dear students, first of all, the structure of bacteriophage So what are bacteriophages, dear students? Yes, you are right. The viruses which infect bacteria or which eat bacteria actually, they are called as bacteriophages. Clear? और dear students, bacteriophage term किसने introduce करवाई थी? याद करें शाबाश. So in 1917, D. Harrelly उन्होंने ये term introduce करवाई थी जब वो rediscover कर रहे थे the work of Twart in 1915 जिन्होंंने काम किया था. Clear? वो बैक्टीरियल कॉलोनीज वाला याद आ गया होगा आपको. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये बात हुई थी. सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज डिस्कस कर रहे थे. सो इट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द हेड सो दिस इज अ बेंजीन रिंग. क्लियर? So this is a benzene ring-like structure. This is head. इसके हमने characteristics discuss किए थे. Hopefully you have remembered. So this is the head. और इसके हमने 4 characteristics को discuss किया था. जी dear students, कौन कौन से थे? Let me review. Number 1, it is hexagonal. मतलब इसके 6 corners, gonal, ठीक है? Gonal का मतलब होता है corners, 6 cornered structure. And number 2, prism shaped. Number 3, 2 triangles. With common base structure. Or 4th one, dear students, that is double-stranded DNA, deoxyribonucleic acid. Clear? So these were the 4 characteristics. So हमने बात की थी कि जो इसकी टेल है वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द हेड. वो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स? सो द टेल, इसको मैं इस कलर से समझाऊंगा, इससे रिप्रेजेंट करूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन रहा है. एक अलग से एक प्रोटीन है, वो इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है. ठीक है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसने बना दिया. ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, अब ये टेल का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा. सारी टेल अभी समझाऊंगा. सो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ एक्चुअली द कोर ऑफ टेल. इट इज कॉल्ड एज द कोर ऑफ टेल. ठीक है, ये टेल का पार्ट है, लेकिन ये ट्यूब की तरह का जो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये देख सकते हैं ट्यूब की तरह का, इसे कोर कहते हैं. ये एक खास किस्म की प्रोटीन से बनता है. ठीक है, और इसके अराउंड, इसके गिर्द एक और डिफरेंट तरह की प्रोटीन होती है जो इसके अराउंड मौजूद है, इसको कवर करती है लाइक दिस. तो सेंटर में कोर मौजूद है
उसके ऊपर एक और प्रोटीन मौजूद है। सो दिस प्रोटीन ये से पिंक कलर में इसके अराउंड है सर्कल्स मैंने ड्रॉ किए, दैट इज कॉल्ड एज शीथ, दैट इज कॉल्ड एज शीथ। सो दैट इज एक्चुअली कवरिंग द कोर, ये कोर को कवर कर रही है। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ठीक है। अब इस शीथ के अपर एंड पे, एट द अपर एंड, यहां पर मौजूद है एक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉलर। इसको साथ साथ लेबल करते चलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉलर। ये सारे टेल के पार्ट्स हैं, टेल। आपने इसको जहन में रखना है, सारे सिर्फ टेल ही मैं पढ़ा रहा हूं अभी। सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि मैं बता रहा था, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द हेड। सो लाइक दिस। और इसकी एक एंड पे कॉलर और दूसरे एंड पे मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज बेस प्लेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड प्लेट। कॉलर जो है ये शीथ को और हेड को आपस में अटैच कर रहा है, इसको इसलिए कॉलर कह रहे हैं, नेक। और जो सी बेस प्लेट या एंड प्लेट, ये एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ टेल फाइबर्स। 1 2 3, 1 2 3। तो कितने टेल फाइबर्स हैं? सो देयर आर 6 टेल फाइबर्स। So these are the tail fibers. अच्छा, टेल फाइबर्स भी वो इतने सादा नहीं है, ठीक है। इन टेल फाइबर्स को अगर मैं एक को सिर्फ बड़ा करके दिखाऊं, जस्ट वन टेल फाइबर, सो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अनदर कोर, एक और ट्यूब इसके अंदर मौजूद है इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर मौजूद है, देयर आर प्रेजेंट वेरियस एंजाइम्स, यहां पर मौजूद है एंजाइम्स। सो इसको अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस तरह से, द टेल फाइबर्स दे कंसिस्ट ऑफ दिस पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर्स विच आर द एंजाइम्स। और ये कौन से एंजाइम्स हैं डियर स्टूडेंट्स? These are called lysozyme. Lysozyme. So this is the enzyme which digests the bacterial सेल वॉल। क्लियर? इनका काम होता है लाइसोजाइम्स का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताता चलूँ आपको, चूंकि ये आ गया तो आपने याद रखना, इसको डिफरेंस को याद रख लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन लाइसोसोम एंड लाइसोजाइम, ठीक है। ये आपने इसमें डिफरेंस करना है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? सो लाइसोसोम आपने पढ़ा था, दैट इज एन ऑर्गेनेल, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं, दैट इज एन ऑर्गेनेल। जबकि लाइसोजाइम ये इटसेल्फ एक एंजाइम है जो कि कहां पर मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेजेस। क्लियर? ये बैक्टीरियोफेज, इसका फंक्शन क्या होता है, इट्स डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल। अब दिखने में ओवरऑल अगर हम बात करें, अब हमने टेल के, इसको मैं इनोमरेट करता चलूं। If we talk about the tail, like the head, कितने इसके स्ट्रक्चर्स को हमने कवर किया? नंबर 1, द कॉलर। कॉलर क्या कर रहा है? शीथ और हेड को आपस में अटैच कर रहा है। नंबर 2, देयर इज सेंट्रल, जो उसमें प्रोटीन है, जो ट्यूबुलर प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड एज कोर, ठीक है। नंबर 3, कोर के गिर्द एक और प्रोटीन है, इसे क्या कहते हैं? शीथ। Number 4, at the end of the sheath there is end plate और base plate, ठीक है। और इसके साथ क्या अटैच्ड हैं? There are attached 6 tail fibers,
कितने हैं? 6, 3 and 3, 6। क्लियर? और इसके अलावा हमने एक और करेक्टर इसमें पढ़ा, दैट इज दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ द लाइसोजाइम्स। ये किसके अंदर मौजूद है? टेल फाइबर्स के अंदर मौजूद है। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके जो फीचर्स हैं ये आपने टेल के याद रखना है। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू द हेड। ये बेसिकली जितना हमने स्ट्रक्चर देखा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, लेकिन कौन सा? T4, दैट इज T4। हमने बात की थी कि प्रीवियसली कि रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने जब बैक्टीरिया के ऊपर काम किया तो ज़्यादातर आमतौर पर रिसर्च पर के लिए जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है दैट इज एस्कर्शिया कोलाई, या जिसको हम सिंपली ई कोलाई कहते हैं। सो उसको जो मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट फेमिलियर फेजेस है जो उसको अटैक करते हैं दे आर T2 एंड T4 और मोस्ट कॉमनली, और उसमें ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ऑफ द T4। क्लियर? और ओवरऑल अगर शेप इसकी देखी जाए तो ये भी याद रखना एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओवरऑल शेप of T4 resembles a tadpole। a tadpole, tadpole पता है ना डियर स्टूडेंट्स? जो इमेच्योर फ्रॉग होता है जिसकी दुम होती है, ठीक है। यहां पर उसकी जस्ट एक रफ सी डायग्राम बना देता हूं। So like this is the tadpole। So it is a froglet, इसको froglet भी बोलते हैं। तो दिखने में ये ओवरऑल किस तरह दिख रहा है? tadpole की तरह का। तो ये एमसीक्यू भी आपने याद रखना है। Now the process, याद रखिएगा the replication process। replication process in bacteriophage। तो वो किस तरह से होगा, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे इसके और लाइफ साइकिल्स की तरफ। तो ये पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें जो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिमेंबर वन थिंग, the bacteriophages only replicate in the bacterium। क्लियर? सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं। और एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि within 25 minutes of infection 200 bacteriophages are formed। क्लियर? अभी अगर बैक्टीरियोफेज एंटर हो गया बैक्टीरिया में तो 25 मिनट के अंदर अंतर वो उस बैक्टीरिया के अंदर 200 कॉपीज बना देगा, और 200 कॉपीज के बाद उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं बचेगी और वो बैक्टीरिया रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है? और एक और चीज एमसीक्यू ये भी याद रखना है दैट द bacteriophage volume is 1/1000 of bacteria। यानी बैक्टीरिया से जिसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, जिसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उस इनके इस्तेमाल से बैक्टीरियोफेज का वॉल्यूम कितना है? 1/1000, यानी कि 1000वां हिस्सा। अब आते हैं स्टेप्स की तरफ। नाउ द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन।
in bacteriophage. So we are talking about the bacteriophage. The first step is adsorption, or which is called as attachment. Clear? So the first step, the bacteriophage lands on bacterium, पहले उस पर लैंड करेगा, then attaches to the receptor site on the cell wall of bacteria, of bacterium, making a weak union between the virus and the bacterial cell wall. Clear? Now, the second step is called penetration. The second step, the tail fibers, उनमें कौन सा एंजाइम है, डियर स्टूडेंट्स? रिलीज lysozyme, which digests the portion of cell wall to which they are attached. Clear? Then the sheath contracts. जो ये शीथ है इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, इसके अंदर क्या मौजूद है? देयर इज प्रेजेंट द ट्यूबुलर कोर एंड पुशिंग द कोर इनटू द सेल वॉल and the plasma membrane of bacterium. ठीक है, सो बैक्टीरिया के साथ अटैच हुआ तो ये शीथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसके अंदर वो ट्यूब है उसको फोर्स किया जाएगा कि वो उसके अंदर, क्योंकि लाइसोजाइम ने वो इतना हिस्सा डाइजेस्ट कर दिया है, अब उसके अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी. क्लियर? एंड after that, there is injection of DNA. Clear? In the last step, there is injection of the DNA. The tail fibers plus sheath contract in a way like an injection. जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, देखा आपने सिरिंज, तो उसको ऊपर से जो उसका पिस्टन होता है उसको प्रेस किया जाता है तो दूसरी साइड से जो सिरिंज होती है उस वहाँ से जो उसकी नीडल होती है वहाँ से वो फ्लूइड निकल रहा होता है. क्लियर? इंजेक्शन फ्लूइड निकल रहा होता है. इसी तरह से ये शीथ ऊपर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ से ऐसे पिस्टन की तरह नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इस ट्यूबुलर हॉलो जो ट्यूब है इसमें से वो DNA अनलोड होना शुरू हो जाएगा और इंजेक्ट कर दिया जाएगा
into the bacterial cell. So like an injection and unloading the viral DNA inside the host, that is bacterium. Clear? So this is how it happens. So here is a bacterium. Clear? And here is the bacteriophage. First of all, it is landing. Clear? It's DNA. And here is the DNA. It's the chromosome of the bacterium. ये इसके साथ attach हुआ. And इसके बाद, in the second step, lysozymes are released. So as you can see, ये पोर्शन जहाँ पर अटैच था वो डाइजेस्ट कर दिया गया और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ट्यूबुलर पोर्शन था उसको फोर्स किया गया, शीथ ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके ट्यूबुलर पोर्शन को कि वो अब देखिए इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया. ठीक है, एंड द डीएनए इज हियर. And finally, the DNA is unloaded. इसको अब थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं. Now the DNA is being injected into the bacterial cell, the host cell. So this is called as injection. And remember one thing, कि जब ये process हो जाएगा, so the protein coat and the tail fibers, ये जो tail वाला portion सारा का सारा बाहर ही रहेगा outside the cell wall. जबकि कुछ जो animal viruses होते हैं वो पूरे के पूरे ही सेल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियोफेज के अंदर ऐसा नहीं होगा. क्लियर? अंदर अब जाएगा, ये इसके साथ अटैच होगा एंड द रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.